ہم دعا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم نہ دعا مانگتے ہیں نہ دعا کا شوق رکھتے ہیں. ہم کسی بھی پرابلم میں، حالانکہ پرابلم ہم سب کو ہیں، ڈیفیکلٹیز میں ہم سارے ہیں، بٹ ڈیفیکلٹی میں کرتے کیا ہیں؟ اس کو فون کرتے ہیں، یار میرا مسئلہ حل کر دو. اس کو فون کرتے ہیں، میرا مسئلہ حل کر دو. یار کسی لارڈ سے، کسی کونسلر سے، کسی میئر سے، کسی منسٹر سے رابطہ ہوگا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ذرا پیسے والے لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے، ان کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب سے مانگتے ہیں، ہم رب سے نہیں مانگتے. اچھا، سب سے مانگنا اور رب سے مانگنا, what is the difference in between this? Please try to understand. If you ask any of your friend, any of your relative that I am in problem, I need some money from you, may first time he or she will give you some amount, okay? اگر وہ قریب کے لوگ ہیں تو شاید تھوڑی سی اماؤنٹ وہ دے دیں. After few days if he come again, I need more money. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ یار ابھی تو دیے تھے, تھوڑے دنوں پہلے ہی تو لیے تھے, خرچ کر دیے, سنبھال کے خرچ کیا کرو. چلو اب دیتا ہوں, اب ذرا سنبھال کے خرچ کرنا. سیکنڈ ٹائم دیے مگر جتا کر دیے, بتا کر دیے, ڈانٹ کر دیے, not in good mood because you asked him second time. And if you ask him third time, then what he say? یار اس کی تو مانگنے کی عادت ہو گئی, he become beggar. When you go towards him fourth time, sometimes he block your phone number. ارے یہ تو لگتا ہے مانگنے والا ہو گیا. Actually that is dunya. If you ask somebody for any favor for once, twice or thrice, he become far from you. Nobody like anybody to ask again and again. یہ ہے دنیا. اور آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی شان کیا ہے. خالق کائنات کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. آسک, کوسچن کرو مجھ سے, I will give you. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا is the weapon of مومن, مومن کا ہتھیار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, is the brain of عبادہ. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے, بھاگ جاتے ہیں فوراً مسجد سے باہر. اچھا جب دعا کرتے بھی ہیں, اب میں کچھ آداب بھی دعا کے بتا دیتا ہوں. ہم دعا کرتے بھی ہیں نا, مائنڈ سیٹ کہیں اور ہوتا ہے, آمین اللہم آمین, but thinking anything else, or sometimes we are watching something different, اللہم آمین آمین آمین. You know what is dua actually? In which quote you are asking something, you are talking with your Allah. Try to understand. You know, it is a direct connection with Allah subhanahu wa ta'ala. If you go in any court of any minister or any lord or any big personality, and if you want to ask him something for your favor, how you ask him? Like this we are making dua, Ameen, Ameen, Ameen. No, we are very conscious, prepare, to the point. Please sir, I have some request in court of you, this is my file, please make signature, I'm very thankful to you. Very focused with dunya, personality of dunya. And when I talk with my Allah subhanahu wa ta'ala, no focus, no attention. Please try to understand. Ulama فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. This is the main problem. ہم مانگتے ہی غافل دل کے ساتھ ہیں, ہمارا دل ہی نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ کی طرف. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ دعا اللہ سے گفتگو کرنا ہے. پلیز دعا کو سمجھو اور دعا کو انجوائے کرو, دعا کی لذت لو. مجھے ایک بات بتاؤ نا, دنیا کی کسی بگ پرسنالٹی سے ملاقات کریں. If you want to meet prime minister of any country, president of any country, minister of any country, what you need first, you have to call his secretary and ask him that I want to meet with him or I want to talk with him. Then he give you some time. Maybe he give or may not give, or otherwise he give you some time. Then he give you date, time, and then slot 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. That's it. In dunya, if you want to talk with any personality, you need the secretary and then time limit, appointment. And if the personality did not knows your language, then you need translator between you and him. Okay, this is the protocol of the big meetings. Subhanallah. And if you want to talk with your Allah subhanahu wa ta'ala, no secretary required, no appointment required,
No translator required. Just raise your hand and talk with your Allah subhanahu wa ta'ala, with your own language, with your feelings. No time limit. It's up to you. जितनी बात करनी है करो ना. Unfortunately, we don't give time to dua. हम ही नहीं करते दुआ, हम ही बात नहीं करते. दुनिया वालों से मांगो तो बुरा लगता है उनको. अल्लाह की शान देखो, जो जितना मांगता है अल्लाह को उतना पसंद आता है, जितनी दुआ करता है. अच्छा, मैं आपको बताता हूं दुआ कितनी करनी चाहिए. अगर आप सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, बायोग्राफी ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एट ईच एंड एवरी स्टेप रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेक्स दुआ. हाउ? बिफोर ईटिंग दुआ, आफ्टर ईटिंग खाना खाने के बाद की दुआ, बिफोर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर दुआ, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर दुआ, व्हेन ही सॉ मिरर ही मेक दुआ, व्हेन ही वेंट और गो इन वॉशरूम, बिफोर बैतुल खला में जाने से पहले की दुआ, फारिग होकर बाहर आने की दुआ. किस किस चीज की दुआ नहीं है? सोने से पहले की दुआ, जागने के बाद की दुआ. ईच एंड एवरी स्टेप पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह से अर्ज करते थे, दूसरे लफ्जों में अल्लाह से बातें किया करते थे. And we are not making dua in whole day, and we are saying I am in problem, I have so many problems, I have difficulties. अरे उससे मांगते नहीं जो मुश्किल हल करने वाला है, उसकी बारगाह में सर झुकाते नहीं, फिर कहते हो मसले हल नहीं होते. वल्लाह, दिल से मांगना सीख लो, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. I will give you one example. Sometime जब हम प्रॉब्लम में थे, खुश नसीब है जिनकी माँ जिंदा है, जिनकी माँ चली गई अब तो यादें ही रह गई. जब हम प्रॉब्लम में होते थे और रात को नींद नहीं आई होगी किसी प्रॉब्लम में, वॉट एवर प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, और हम रात को जाग गए होंगे. वी वोक अप लेट नाइट, वी आर ट्राइंग टू स्लीप बट कांट स्लीप, एंड देन वी वेंट इन द कोर्ट ऑफ आवर मदर. Oh mother, I can't sleep, I'm in some problem, and tears in our eyes. What at that time what my mother did? क्या मेरी माँ करवट बदल कर सो गई थी, या मेरी माँ भी जाग कर बैठ गई कि बेटा क्या हो गया? मुझे परेशान देखा तो माँ भी परेशान हो गई. माँ ने सीने लगाया, बेटा घबरा नहीं, मैं दुआ करती हूँ. ऐसा ही है ना, माँ ऐसी होती है ना. मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस रात को आप परेशान होकर उठ जाएं, परेशान है ना, बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे, बीमार होंगे, कर्जा होगा, रोजगार के प्रॉब्लम होंगे, मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, औलाद नहीं हो रही होगी, औलाद हो गई है तो सेहतमंद नहीं है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं. मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ. ट्राई टू वोक अप बिटवीन द नाइट. नींद से उठ जाओ किसी दिन तहज्जुद के वक्त है, और उस वक्त आंखों में आंसू लिए अल्लाह के पास चले जाओ कि या अल्लाह परेशान हूँ, मालिक नींद नहीं आ रही, बीमार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, अल्लाह कर्जे में डूब गया हूँ, मेरे घर में बड़े लड़ाई झगड़े हैं, तेरा सो मेनी प्रॉब्लम्स या अल्लाह, मैं बंदा हूँ तेरा और आज तुझसे मांगने आया हूँ, तेरे सिवा कौन है मेरा, मैं और किससे अर्ज करूँ मेरे मालिक, तू ही हल्लुल मुश्किलात है, तू ही मुसब्बिबुल अस्बाब है. बिलीव करो, जब तड़प कर मैंने अपनी माँ को पुकारा, मेरी माँ ने मुझे सीने लगाया था, वो तो कई माँओं से ज्यादा चाहने वाला है ना. कभी पुकार कर तो देखो, कभी कनेक्शन तो बनाओ उससे, कभी दिल से मांगो तो सही. हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हमारा खुद भी बिलीफ नहीं है दुआ पर. एक बात और समझ लो आज, एक्चुअली द सक्सेस और द कबूलियत ऑफ दुआ, द की ऑफ दुआ इज बिलीव. अगर आपका यकीन है ना कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूं वो देगा, तो वो जरूर अता फरमाएगा. हम दुआ भी मांग रहे होते हैं और हमारा यकीन भी नहीं होता है, पता नहीं यार होगी नहीं होगी, मांग लेते हैं, नहीं होगी. उलमा फरमाते हैं जिसको यकीन ना हो ना उसकी दुआ कबूल नहीं होती. यकीन चाहिए, हाँ यकीन. हमारे हम तावीज लेते हैं, कई लोग हमें बताते हैं यार मैंने तावीज लिया मेरा मसला हल हो गया. हम 10 साल से तावीज पहन के बैठे, हमारा मसला हल नहीं हो रहा. क्यों? उसने जब लिया था तो ये जान कर लिया था कि अल्लाह के नाम का तावीज़ है, मेरा काम हो जाएगा. उसका काम हो जाता है. यकीन जिसके पास हो ना, उस पे दम करो, उसका दम में काम हो जाता है. वो वजीफा पढ़ता है, उसका वजीफे में काम हो जाता है. हमारा नहीं होता. वजह यह है कि फर्क यकीन का है. इसको इस बाकी से समझो कि एक विलेज में बारिश नहीं होती, देयर वाज नो रेन.
for so long in any village. गांव के लोगों ने एक मीटिंग की कि will make दुआ for rain, नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे और सब मिल के दुआ करेंगे in one ground. So everybody must come on that time in that ground. पूरे विलेज को इनवाइट किया गया, सारे विलेज के लोग जमा हो गए. फ्रॉम सो लॉन्ग, कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी. ठीक है, अब क्या हुआ, एक यंग मैन, नौजवान उस विलेज में, उस ग्राउंड में आया, बट नॉट एम्प्टी हैंडेड, ही केम विद अम्ब्रेला. वो छतरी के साथ आया. हंसने लगे लोग उस पर कि अजीब आदमी हो, यू आर अमेजिंग पर्सनैलिटी, फ्रॉम लास्ट 4 years देयर इज नो ड्रॉप ऑफ रेन एंड यू केम विद अम्ब्रेला. क्या कमाल का जवाब दिया. वो कहते मांगने किससे आया हूं, बारिश देने वाले से मांगने आया हूं ना. उसने बरसानी है बारिश, मैं वापस कैसे जाऊंगा, क्या भीगता हुआ जाऊंगा. और यकीन माने ऐसा ही हुआ. जब लोगों ने हाथ उठाए बारिश के लिए, बारिश मूसलाधार बरसने लग गई. सारा विलेज, सारे लोग भीगते हुए गए. नौजवान अपनी अम्ब्रेला के साए में घर को जा रहा है. असल में यही यकीन है. और क्या खूब बात कही शायर मशरिक ने, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा. एक्चुअली वी नीड दैट, यू नो, वो कनेक्शन रिक्वायर्ड है. हजरत इब्राहिम के ईमान का आलम क्या था, तवक्कुल का लेवल क्या था कि आग में फेंक दिया गया. आप कहते मेरा अल्लाह काफी है, अल्लाह ने उस आग को गुलजार बना दिया. अल्लाह अकबर. शायर मशरिक कहते हैं अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा. आज भी आपकी आग, आज भी आपकी प्रॉब्लम्स, आज भी आपकी कैलेमिटीज गुलजार बन जाएंगी. वो ईमान का लेवल तो लाओ ना. तुम्हें रब पर ही भरोसा नहीं है, मांगते हो अल्लाह से, फिर भी कहते हो होना कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं होना भाई. अब दुनिया में भी आप किसी के पास जाएं, सर आपसे एक काम है, आपकी मेहरबानी मेरा काम कर दे, मगर मुझे लगता है आप करेंगे नहीं. सामने वाला क्या बोलेगा, फिर जा भाई, मेरे पास क्यों आया है, जब तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मुझसे काम करवाना. दुनिया वाला भी नाराज हो जाता है. हम बेसिकली अल्लाह के साथ भी यही कर रहे होते हैं. तो दुआ मांग रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा. तो अल्लाह के बंदो, अपने रब पर तो भरोसा कर लो. ये एक मिस्टेक है जो हम दुआ में करते हैं. अच्छा, फिर एक और बड़ा प्रॉब्लम, दुआ कबूल ना होने का एक बहुत बिग रीजन, वो है हराम रोजी, हराम सस्टेनेंस. जिसकी रोजी हराम है ना, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है. चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो रोजादार. प्लीज चेक योर अर्निंग्स. हम बाज़ औक़ात सारा हराम नहीं कमाते होते, हाँ बाकी सब चीजें ठीक होती, कहीं ना कहीं किसी किनारे से, कहीं झूठ बोलकर, कहीं डॉज देकर, कहीं धोखा देकर, कहीं रॉन्ग डॉक्यूमेंट साइन करके, कहीं थोड़ा इंटरेस्ट शामिल करके छोटा मोटा हराम शामिल कर रहे होते. अच्छा, फिर शैतान बड़ा मरदूद है ना, वो कहता है यार थोड़ा ही तो हराम है ना, बाकी तो सब ठीक ही है, अल्लाह माफ करने वाला है. मैं आपको इसमें ऐसे समझा देता हूं कि एक बड़ी सी बिग बॉटल लीजिए, फ्रेश स्वीट मिल्क, एक बिग बॉटल 2 लीटर, और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स आप यूरिन के डाल दीजिए. अब आप पिएंगे उस दूध को. नाउ विल ड्रिंक दैट मिल्क. व्हाई? होल बॉटल इज प्योर मिल्क, स्वीट है. बट यू सेड 2 ड्रॉप्स ने, 2 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, उसने उसको नापाक कर दिया, नजस कर दिया. सो दैट इज द हराम सस्टेनेंस. थोड़ा सा हराम भी हमारे माल में जब मिलता है ना, वो माल की बरकत ले जाता है, हमारी दुआओं में बड़ा असर आ जाता है. एक बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेहिस्सलाम saw a person is crying in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, accept my dua, I am in a problem, oh Allah azza wa jalla, crying. Hazrat Musa alayhi saw that person and asked in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah azza wa jalla, please accept his dua, he is crying in your court. Allah ye ro raha hai, tadap raha hai. Allahu Akbar. You know what reply came from the court of Allah subhanahu wa ta'ala? Oh Musa, if he cried lot, इतना क्राई करे, इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, या इतने हाथ उठाए कि इसके जो हैंड्स हैं वो स्काई को टच कर लें. Musa did not accept his dua. I will not accept his dua. मैं दुआ इसकी कबूल नहीं करूंगा. Oh Allah Azza wa Jalla, what is the reason behind this? Allah Tabarak wa Ta'ala said that his earning is haram. ये जो कमाता है ना ये हराम है, ये जो खाता है वो हराम है.
If you want that your du'as become acceptable, please check your earning. Only earn halal. اور وہ جو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے نا کہ یار تھوڑا حرام کماتا ہوں پھر مسجد کو بھی تو دے دیتا ہوں, چندہ بھی تو دیتا ہوں مسجد میں, ہاں میں حج میں بھی جاتا ہوں, میں عمرے بھی کرتا ہوں, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, تھوڑی گڑبڑ کرتا ہوں, بعد میں اس کو لیول کر دیتا ہوں. یہ بہت خطرناک وار ہے شیطان. آج سمجھ لو اس کو, یہ لیول نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. اس کو اس ایگزامپل سے سمجھیں. آپ کسی بادشاہ کے پاس, کسی پرنس کے پاس یا کسی پریزیڈنٹ کے پاس جائیں اور اس کو ایک بڑا خوبصورت سا گفٹ دیں with beautiful packing and wrapping, اور جب وہ اس کو کھولے, اس گفٹ کو کھولے وہ بادشاہ, تو اس پیکنگ کے اندر جو بوٹل نکلے اس بوٹل میں یورین بھرا ہوا ہو, تو بادشاہ پلیز ہوگا یا ان پلیز ہوگا؟ یہ کیا کیا, تحفہ مجھے دے کر گئے اور پیشاب کا تحفہ دے گئے, گندگی کا تحفہ دے گئے. ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بھیج رہے ہیں حرام کا, حرام کما کر مسجد میں چندہ دے رہے ہیں, حرام کما کر صدقے خیرات کر رہے ہیں. یہ قبول نہیں ہونا. اللہ کو میرے اور آپ کے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے. سب حلال کماؤ, بے شک تھوڑا صدقہ کرو, اللہ اسی میں برکت ڈال دے. تو اپنی روزی چیک کرنی ہے. اگر دعا قبول کروانی ہے نا تو حرام روزی نہیں کمانی.